हाय गाइस, आई एम अन्वेषा, यू आर वाचिंग सिंपल टिप्स अन्वेषा। आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट समर स्किन केयर एंड समर हेयर केयर रूटीन्स। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट DIYs घर पे आप जो कर सकते हो अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है समर के लिए जो अप्रोप्रिएट है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ स्किन, ऑल काइंड्स ऑफ बजट ऑफ प्रोडक्ट्स। मेरे सामने ऐसे थोड़ा प्रोडक्ट्स अभी है मेरे आंखों के सामने, एंड आई एम गोइंग टू पिक एंड चूज ऑप्शंस फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन, फॉर योर फेस विद डिफरेंट स्किन टाइप्स। एंड देखो, आपको एक चीज समझना होगा कि आई एम by profession, I am a beauty lifestyle fitness vlogger, YouTuber. Then over these so many years, I've had the chance to work with a lot of good skincare brands. So definitely, I keep mixing and matching and switching my skincare products all the time. बट ये नेसेसरी नहीं है कि आप भी ये सेम चीज़ करो, ठीक है। इट्स बेस्ट टू स्टिक टू योर स्किन केयर रूटीन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है। बट इफ़ योर स्किन इज नॉट सेंसिटिव एंड इफ़ योर डाइट इज राइट, इफ़ योर सिस्टम इज राइट, पीना सही है, पानी पीते हो, बाकी सब सही है अंदर से, देन देयर इज नो हार्म इन एक्सपेरिमेंटिंग विद प्रोडक्ट्स। ओके, लेट मी टेल यू द की टू अ हेल्दी हेयर एंड हेल्दी स्किन 70 to 80% is of course your lifestyle, your diet, your workout. Okay, once you get that fixed, every other skincare products does only 30% or 20% of the job is what I personally believe. Okay, so now without further ado, let's start with the summer skincare routine and कंसर्न्स क्या क्या है लोगों के। मेरे क्या क्या कंसर्न है, जैसे एक्ने हो गए, पिगमेंटेशन हो गए, स्पॉट्स हो गए, उसके लिए क्या क्या आप DIY कर सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो विद इन ऑल बजट रेंजेस, अफोर्डेबल टू हाई एंड, सब मैं बता दूंगी। सो लेट अस बिगिन। लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे ही है सब, बाहर कोई जा नहीं रहा है। पोल्यूशन भी बहुत हद तक कम है, एयर इज क्लीन एंड एवरीथिंग। बेस्ट टाइम फॉर अ स्किन एंड हेयर। खाना बना रहे हैं, एक्टिव रहने की कोशिश कितना कर रहे हैं, मतलब आई एम वेरी बिजी, लाइक वी आर मैनेजिंग द हाउस, मैनेजिंग द किचन, सो एंड ऑल्सो डू माई वर्कआउट फॉर हाफ एन आवर, आई मेक श्योर दैट आई हाइड्रेट वेल। ये बोलने की बात नहीं, ये करने की बात है। तो एवरी हाफ एन आवर हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे मेमोरी अगर सेट कर लोगे फोन पे तो यू रिमेंबर, अलार्म बजेगी और पानी पियोगे, उठोगे और पानी पियोगे। सेकंड थिंग, एक CTM रूटीन होना चाहिए, खास करके नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शुड बी लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, एंड इन द मॉर्निंग ऑफ कोर्स बेसिक्स यू शुड डू। एक CTM मतलब क्लेंजिंग, टोनिंग, एंड द लास्ट इज मॉइस्चराइजिंग और सीलिंग इन द मॉइस्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन स्क्रब योर फेस ट्वाइस अ वीक, you can mask your face once a week or once in 15 days. Now when it comes to hair, I prefer a very simple routine which is shampoo and conditioner. Once in a week a hair mask, or once in 15 days a hair mask. Oil my hair once always in 15-20 days. It's not straighten. बहुत लोग पूछते हैं कि straighten क्या है, क्या क्या है, कुछ नहीं किया है, ये genes है। This is genetically I'm like this, and I'm also a Bengali, which means I eat a lot of protein, fish, बचपन से खाती आ रही हूँ, which affects the quality of your hair. It is nothing but protein, ठीक है। Let's begin with some recommendations of products एंड स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, एंड ऑल्सो लेट्स बिगिन विद सम DIY। घर पे बैठ के आप कैसे अपने स्किन की केयर ले सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट मास्क, DIY मास्क दैट यू कैन डू इज द उपटन फेस मास्क। सबको इसके बारे में पता है। हाफ ऑफ योर स्किन प्रॉब्लम्स विल इरेज। कुछ नहीं करना है, आपके घर पे बेसन होगी, आपके घर पे टर्मरिक होगी, हल्दी, है ना, एंड देन यू कैन ऐड मलाई टू इट और रॉ मिल्क, कच्चा दूध, एंड और यू कैन ऑल्सो ऐड दही टू इट। स्किन टाइप पे डिपेंड करता है किसके स्किन पे क्या सूट होती है। दिस इज वॉट इज द मिक्सचर गोइंग टू बी, एंड यू फेटो उसको और फेस पे लगाओ। दिस इज अ excellent face mask or face scrub. It removes your dead skin cells, it clears your spots, pigmentation. अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ये pigmentation spot वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। It should not be there. Same mask can be used on your body as well as a body scrub, so it's a multi-purpose product. Okay, now but if you're someone like me who likes a lot of skincare products and everything, then now I'm going to give you a range of options for all skin types, different kind of skin types, and something that if you want you can invest in. Okay, first of all I'm going to talk to you guys about face washes. I'm very sorry अगर पीछे आपको उत्सव की आवाज़ आएगी, because he is also working from home, दूसरे रूम पे, so he's always on video calls with his office people. So but we both have to manage in the house and work together, so I'm sorry for that. Okay, so the first face wash that we have probably all of us used our entire lives from bachpan is the Himalaya new purifying neem face wash. For all skin types. Now this is one excellent budget friendly affordable face wash. Next face wash that I'm also currently using is this one vitamin C gentle foaming face wash from Scent Botanica. This one, it comes with a pump,
and it is foamy. Okay, this is vitamin C, antioxidant, pure natural extract. It's a paraben free product. Now the products that I'll show here, some of them will be with chemicals, some of them will be without chemicals, natural products, but it's a choice. Now I'm okay with all kinds of products. It's an expensive product, 599 rupees, but it's an excellent product, specifically if you have a normal to oily skin. A very very good face wash. My skin in summer is normal. Usually in winter it tends to go towards dry. It is dry, but this one, mostly all kinds of products suits my skin. Okay, now I'm going to show you two more face washes. One is from oily skin. The one that I absolutely love is the M Caffeine green tea face wash, which is for all skin types. Again, green tea with vitamin C. This is again a natural product and great for oily skin, specifically normal to oily skin. Again, it's almost over. Quite a good product. And one for normal to dry skin. For drier skin is the Nivea Milk Delights Dry Skin Face Wash, which has honey in it and healthy looking skin. Of course, Nivea, this product is not a natural product, but it's also a great product for dry skin people. Find it right now, but it was quite affordable. The M Caffeine one is 325. This one. Oh wow, one great product, one face mask that I absolutely love is the coffee face mask from the same range of M Caffeine. It's so good, and this is also for oily skin. Like Utsav also loves this face mask. I think मैंने 2 बार और उत्सव ने 2 बार use किया because he has oily skin. So this is something that you can use definitely for in summer season. Another great face mask is the Mamaearth Upton face mask, which I don't have because it's over. अभी मेरे पास और है नहीं, वो खत्म हो गई है. That's also very good a face mask. Okay, now let's move on to toners, face toners. I'm looking for the products in this jungle. Is this Bioderma Micellar Water. Now this is basically a makeup remover, the Bioderma Micellar Water, but I use it as a toner. It's so good. Okay, fortunately this is a little expensive. I don't think so a lot of people will be comfortable buying this, so you can definitely invest in the Mamaearth toner. But then the problem is that this is also 399 rupees. If you want something very much in budget, then you should just go for the Biotique's Bio Cucumber toner. That's also decent enough and in budget. All skin types and also good for sensitive skin people. Let me do about serums. Serums are a part and parcel of my everyday skincare routine. I love serums. Serums are something that you apply before your moisturizer because it's very lightweight. It penetrates deep into your skin before the moisturizer. One is of course the Olay White Radiance Essence. I love this serum. I think this was actually my first serum of life and I love this serum. It's of course Olay products are not natural products, but I'm completely okay with it. This is good for all skin types. Now this one is again another great serum, the Mamaearth face serum. Again a great product. One thing I wanted to clear here, that a lot of people don't like the fact that I work with Mamaearth. Why not? Mamaearth is actually a very good product. I'm not saying that all their products are best. Of course, not all products are best, but most of the products are good because they are natural products, A, and not very expensive, B, and very safe sided. So I genuinely, because I've been using Mamaearth products for 3 years now, so, and they are a part and parcel of my life. So I personally use the Olay moisturizer. I have this Olay moisturizer, and another option that I'm preferably using abhi summers में is the Olay Whip because ये काफी lightweight है. This one was good for the winter, spring time. The Olay, my Regenerist was great for the, for winters. But for summers, they have the Olay Regenerist Whip with SPF 30 in it. So this one does a good job for me. I like it. Yes, Olay products are not natural. They do have chemical in it, but they're good for skin. If you have a normal to sensitive skin, you can use it. And specifically 25 above mature skin can definitely use these products. Okay. I take a like a very small amount and apply it. I love the smell. I don't know why. It doesn't have any special smell, but I just like this Olay smell because बचपन में मम्मी भी Olay use करती थी. It's a very nostalgic thing for me. It's this Nivea Soft moisturizer, a very tiny bottle. Something that also you can definitely try. I like this one. It's lightweight. This is not the blue one. It's not the Nivea blue one. This is a lightweight cream. With the mint in it and minty feel. Summer ke liye theek hai. Okay, now we come to sunscreen. Very important in summer, sunscreen. Okay, I just have two options here. One is this a gel based sunscreen, which is again great for
स्पेसिफिकली सुपर ऑयली स्किन. अब सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत लोग बहुत सोचते हैं, दे डोंट लाइक अप्लाइंग सनस्क्रीन, दे विल फील नॉट वेरी कंफर्टेबल बिकॉज इट विल स्वेट एंड ऑल्सो फॉर सच पीपल अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन डज द जॉब. ये एक्टे का एक सनस्क्रीन है with SPF 50+ with anti-pollution and natural again है. This is a very very good sunscreen. It's a gel based sunscreen. Absolutely love this product. It's a little expensive for all skin types again. 1099 का है. The one also great for normal to oily and a matte effect is the Mamaearth sunscreen. This is the Mamaearth Indian sunscreen with carrot seed and turmeric. These are the two sunscreen that I have right now. You can go for it. You can also go for the Plum, buckthorn and grapeseed sunscreen, but that has SPF 30. You can also go for the Scent Botanicals vitamin C sunscreen sunblock, but unfortunately I think this is something that people with too much oil on their face and too जिनको चिपचिप लगता है and cannot tolerate so much moisturizer on their face, they should skip this. But people with normal to dry skin, people who like moisturization and sunscreen together, they can go for the Scent Botanicals vitamin C sunscreen or moisturizer. Skincare part is now over. By the way, the last few products, moisturizer and जो मैंने दिखाया था, वो फॉर ऑल स्किन टाइप, एंड मैंने आपको बता दिया कि सनस्क्रीन कौन से स्किन टाइप यूज कर सकती है. नाउ द थिंग दैट कम्स इज एक्ने पिंपल्स हो रही है तो क्या करें? डाइट सही करो, खाना पीना सही करो. देखो क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो. अगर हार्मोनल एक्नी है, कुछ भी कर रहे हो, खाना पीना सही कर लिया, पानी सही कर लिया, यू कैन ट्राई ACV, ऑयल पुलिंग, you can try using multani mitti, raw multani mitti on your face. You can try applying neem face mask or applying direct neem on that pimple. You can try applying sandalwood paste. बहुत सारे ऐसे DIY options है. But if nothing is working, then it's hormonal acne. Then you have to change your lifestyle. You have to get yourself checked for PCOD. You also might have to go and visit a dermat. ठीक है? So these are certain concerns, and very frankly I'm telling you, these are the things. Hormonal acne है तो DIY कुछ काम नहीं करेगी, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा, आपको अपना हैबिट्स, ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, एक्सरसाइज, एवरी हैबिट रूटीन हैज टू चेंज. नाउ लेट्स कम टू हेयर. मोस्ट कंसर्न्स PCOD, हेयर थिनिंग, हेयर फॉल, हेयर लॉस. एलोपेशिया का तो देखो, एलोपेशिया का कोई प्रोडक्ट से सोल्यूशन नहीं है, वो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, वो आपको दवाई देंगे या हेयर ग्रोथ के लिए कुछ करेंगे. एलोपेशिया इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बट इफ यू आर लूजिंग हेयर बिकॉज ऑफ PCOD और बिकॉज ऑफ सम रीजन यू डोंट नो और बिकॉज ऑफ वेट लॉस, so these are the reasons you have to understand. Okay, number 1, massive hair loss हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा when you're losing weight because आप बहुत जल्दी weight loss कर रहे हो. What is going wrong with your weight loss journey? Because every body type is different, every person is different. If you cut off a lot of chunk of your food from your diet, वो hair loss होनी है. न्यूट्रिशन अगर ढंग से मिल नहीं रहेगा, विटामिन सही है नहीं आपके डाइट पे, हेयर लॉस होगा ही, हो सकता नहीं होगा ही. So you have to see that you eating nutritious and right when you're on a weight loss journey. Second, PCOD में very common is hair fall. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Same thing again, cure your PCOD. उसके लिए प्रोडक्ट नहीं काम करते, उसके लिए फिर से मैं कह रही हूँ, it's 70-80% on what you eat, what you think, what you drink, what you do with your lifestyle, with your workouts. All of them matter the most. So what you're gonna do is, first of all, you're gonna check कि आप क्या नहीं खा रहे हो, right? आपके डाइट में फाइबर्स होनी चाहिए, विटामिन होनी चाहिए, A, B, 12, D विटामिन, इनकी कमी है कि नहीं, ये सब करो. फिर विटामिन E होनी चाहिए आपके डाइट, विटामिन C होनी चाहिए आपकी डाइट में, बायोटिन होनी चाहिए आपके डाइट में. दीज लाइक प्रोटीन अच्छे से होनी चाहिए. हेयर इज नथिंग बट प्रोटीन. नाउ फॉर सम प्रोडक्ट्स, ओके, आई विल टेल यू दैट आई हैव नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड नॉन नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट्स, केमिकल हेयर केयर प्रोडक्ट्स. ठीक है, मेरे हेयर पे सूट करती है. सो वन ऑफ द करेंट थिंग दैट आई एम यूजिंग इज, मैंने पहले ही बोला है, इज दिस इज माई थर्ड बॉटल. द थर्बल एसेंसेस वाइट स्ट्रॉबेरी एंड स्वीट मिंट शैम्पू एंड द कंडीशनर. एब्सोल्युटली लव देम. बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको ये सूट नहीं होती है. if you want for natural product, you can go for 2 products. Okay, this is the Mamaearth tea tree shampoo or the Mamaearth onion shampoo and the plums shampoo. ठीक है, now the plum shampoo does not suit that well on my hair because एकदम lather up नहीं होती है और मुझे comfortable नहीं लगता. But sulfate free natural shampoos usually do not tend to lather up that much. Okay, that is what is the tendency of natural shampoos. वो ज़्यादा झाग नहीं होगी, वो normal है.
So these are the two good options that you can go for. Now with hair mask, I personally prefer the Mama Earth's hair mask. The onion hair mask or the tea tree hair mask is way better than the Plum's hair mask, but a great not budget chemical है product shampoo that I personally love. बहुत ही budget friendly है, is the Kesh King's anti hair fall shampoo. I don't know, man. I love the shampoo way more than even the hair oil. I mean, I have used the hair oil, but उससे better मुझे shampoo लगती है. Like amazing. And if you have dandruff, then this is something that Utsav uses. Is the Head and Shoulders anti-dandruff shampoo with cool menthol. This is the only thing that suits his dandruff hair. So these are some of the shampoos that I had, and these are what I use. So I told give you natural options of shampoos and chemical options of shampoos, and all the shampoos claim that they're for all hair types. But I told you what you got to do. Now, if you don't want to invest in a hair mask and do your own hair mask, then you best is to use a simple egg hair mask. और उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा. Just take 1 egg or 2 egg according to your hair length. The entire egg. उसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के फेंट लो अच्छे से and just apply it before your shampoo for 1 to 2 hours and leave it on your entire length from scalp to root. Keep it and do it. अगर आपको egg use करना नहीं है hair पे, आपको smell अच्छी नहीं है, तो दही फेंट लो. The hair oil that I use is the Mama's onion hair oil. Great product, definitely worth investing in. And I'm doing a lot of lockdown series videos, different kinds of videos. Vlogs in it, it has recipes in it, it has workout with me, it has exercises and live sessions and different kinds of diets and everything in it. Comment and let me know what are the kind of videos you want to see. And I'll see you guys soon in my next video. Take care. Bye bye. Love you. Here's the lockdown series to see a series and playlist, and check out the playlist here definitely for all the amazing videos. Bye.